everyone, welcome to my channel all about biology, and this is Jyoti Verma. Today we are going to discuss about the oxidation of the pyruvate. In our previous videos we have discussed about the glycolysis, in which glucose gets broken down to give rise to two molecules of pyruvate. After that we have discussed about the fate of pyruvate in our next videos, in which we have discussed that if oxygen is present then there are different cases, and if oxygen is absent then there are different cases. So now in this video we will discuss about the oxidation of the pyruvate. So if oxygen is present, then what are the series of reactions that are taking place after the pyruvate? We will discuss about that in this video. Okay. So what happens in this case? Before the Krebs cycle, the pyruvate is carried by the transporter proteins. Okay, so the as you know that the pyruvate gets formed into the cytosol of the cell. So it is carried by means of transporter proteins into the mitochondria, and this pyruvate enters into the mitochondrial matrix where oxidation of pyruvate takes place. So in the mitochondrial matrix, oxidation of the pyruvate occurs. So as you can see in this diagram, this is your pyruvate which is present in the cytosol. This is carried by the transporter proteins into the mitochondria. This is your mitochondria, which is called as the powerhouse of the cell. It consists of an outer membrane, an inner membrane, and the space that is between these two membranes is the intermembrane space, and this one is the matrix of the mitochondria. So that pyruvate is carried by the transporter proteins into the mitochondrial matrix where a process takes place which is called as the oxidation of pyruvate. So in this case, this is your pyruvate. It undergoes oxidative decarboxylation. It means that there is removal of CO2 from the pyruvate in the presence of oxygen, and this pyruvate gets converted into acetyl CoA. Okay. So this is about the oxidation of the pyruvate. So what is the oxidation of the pyruvate? The pyruvate enters into the mitochondrial matrix. It undergoes oxidative decarboxylation, due to which there is a removal of a CO2 from the pyruvate, and the pyruvate gets converted into acetyl CoA. Okay. So we are going to discuss in detail about that reaction which is taking place in the mitochondrial matrix before the Krebs cycle. Okay, so the oxidation of the pyruvate is the link between the glycolysis and the Krebs cycle. So it is a single step which involves the oxidation of the pyruvate, and it is a link between the glycolysis and the Krebs cycle. That's why it is sometimes called as link reaction. So this is the reaction of the oxidation of the pyruvate, in which the pyruvate undergoes oxidative decarboxylation and it gets converted into acetyl coenzyme A along with the release of one molecule of CO2. The enzyme that is used in this process is a pyruvate dehydrogenase complex, and in this process NAD is converted into NADH. So we are getting one molecule of NAD from the oxidation of one molecule of pyruvate. And as we know that there are two molecules of pyruvate from the glycolysis, therefore we will be able to get 2 NADH from 2 molecules of pyruvate. These NADH will be later utilized in the electron transport chain, and we will discuss about that in detail in the electron transport chain. So the carboxylic group of the pyruvate is lost as a CO2. So this is the carboxylic group of the pyruvate. It gets lost as a CO2 while the remaining 2 carbons form the acetyl part. This CH3CO is your acetyl. Okay.
So this forms the acetyl part of the acetyl CoA. So in this way there is formation of acetyl coenzyme A from the molecule of pyruvate by the process of oxidation. Okay, and after the formation of acetyl CoA, this acetyl CoA enters into the Krebs cycle. After that Krebs cycle starts. Okay, सो हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट के बारे में बात कर रहे थे. पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है. ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पाइरूवेट के. फिर वो पाइरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. वहाँ पे जो आपका पाइरूवेट होता है उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है और उससे फॉर्मेशन होता है एक नए मॉलिक्यूल का, जो कि है आपका एसिटाइल कोए. ये एसिटाइल कोए फिर क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है. सो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट, ये एक लिंक है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में. ये एक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस के बाद होने वाली और क्रेब्स साइकिल के पहले होने वाली ये रिएक्शन है. तो इसे हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं. तो अब बात कर लेते हैं इसके रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा पाइरूवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो एक CO2 है वो निकल जाता है. जो 2 इसके कार्बन बचेंगे वो एसिटाइल को ए में एसिटाइल का पार्ट है. ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, जो इंजाइम यूज़ हो रहा है वो है आपका पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इंजाइम यूज़ हो रहा है. ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजाइम होता है. यहाँ पे आपको NAD से NADH भी बन रहा है इस स्टेप में. और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल है पाइरूवेट के, तो हमें 2 NADH मॉलिक्यूल मिलेंगे पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से. और ये जो 2 NADH आपको मिलेंगे, इनका यूज़ लेटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा, जिसे हम आगे के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये वीडियो था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट पे, जिसे हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का एक रिएक्शन है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. थैंक यू सो मच.